Okay, good evening, all of you. In the last section, we discussed about the concept of inheritance. In that, we discuss single type inheritance, multi-level, and hierarchical inheritance. Two types are remaining. Fourth type is a multiple inheritance, and fifth one is a combination of all single, multiple, multi-level. Okay. So in that case, if you want to do the multi-level inheritance, you need to understand the concept of abstract classes and you need to understand the concept of interfaces. So for that reason, we'll take a break for a few days to do the program of multi-level multiple inheritance because before that we need to complete the abstract classes and interfaces. Okay, before the abstract classes and interfaces, we need to clear the concept of constructor by using we can say that function overloading and the function overriding concepts. This keyword is important and later on we will start directly abstract classes. Okay, these concepts are very powerful and useful, so that's why today we'll discuss about the constructor of Java. And Shruti, at the end of this session, I will explain the concept of static and non-static. I will provide one example also. So now I will start with the constructor. So what will be the constructor? See, while defining the class, we need to define the constructor. There is a by default constructor is there. And if you are not defining that constructor also automatically that by default constructor will be called. Okay, this is the procedure. But in somewhat conditions, for example, if you want to declare some variable, if you want to define some method, and that method automatically, if you want that method will be initialized, that means automatically initialization of variable required. There is no need to call that method automatically. In that case, we'll call the constructor. Okay, a constructor is a special member method. That means it is a member function method which will be called by the JVM. What is a JVM? JVM stands for Java Virtual Machine. In that case, when I trying to compile my program, my .java program will be converted into .class. That means the intermediate code with the help of that JVM. And in the JVM, we can execute the .class program. Okay, it is an environment, Java Virtual Machine. It is a runtime environment where we execute our programs. Okay, so in that case, it is a special member. If someone asks what is a constructor, then we need to specify that definition. It is a special member function which will be called by the JVM implicitly, not explicitly. That means system automatically called. Okay, there is no need to call that constructor by end user, or we can say that the programmer. Constructor is meant for the initialization of the object. I already told in some cases if you want to initialize some variable, in that case there is no need to initialize that method or variable directly. Instead of that, we need to place that variables inside the constructor, and when we create the object at that time, automatically that default constructor will be executed. Automatically that default constructor will be executed. So let's check the some disadvantage, some advantage of the constructor. So in that, a constructor elements the placing the default values. Okay, for example, if you want some default value and if you want to eliminate that place of default value, then we will use the constructor. A constructor limits the calling the normal method implicitly. We all know that whenever we declare the any method inside the program or inside the class, that method we need to call by using an object. We all know that. Okay, if it is a non-static method, then that method we need to call by using a object. What is a non-static method? The static keyword is not present in or we can say that precedence of function name. Precede of function name, function के आगे अगर static keyword नहीं है, then that method is a non-static method, and that method will be executed by using a creation of object. Once we create the object, we'll call that method by using object name. Like I have one method having the name show. Then what should I do? I will call, first of all, I will create the object class object name is equals to new class name and object dot show. This is the way to execute a non-static method.
but every time we need to call that method. So if you want to eliminate that, if you don't want to call the method, then in that case while creating the object automatically that method will be called. ऐसा लग रहा है आपको कि जैसे भी मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एट द टाइम इनिशियल प्रोसेस जितने भी हो वो ऑटोमेटिकली हो. सो इनिशियलाइजेशन और दैट मेथड अगर एग्जीक्यूट होना चाहिए ऐसा लगता है, then we will use the concept of constructor. Just while performing the application, while writing a code you will get the idea. Just understand the theoretical concepts. Rules, properties, characteristics of a constructor. We all know that we have some set of rule while defining the constructor. Constructor किसी भी कहा नहीं जा सकता. We need to identify whether it is a constructor or whether it is a normal function. See, it is a special member function. We all know that there is a member function. We already learned about in a class and object session. There is a member function. That function have a return type like that stuff, and that will be called by using the object. But it is a special member function. We all know that the meaning of special. Okay, sometimes we can call that called as important. It is a special member function. Okay, so that special member function have some rules. अब इसमें क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में, did you know about the normal function and special member function? Then we need to answer that yes, the normal functions are there and some special member function are also there. The special member function is called as a constructor. So the next question will ask what is the difference between normal function and a constructor. In that case we need to specify certain rules. What is the difference between that function, normal function and special member function? We need to specify. Okay, so what will be the first name? See, if it is a constructor name, that must be similar to the class name. I will identify. If our program contains some constructor, how we will identify? The first rule is the constructor name. कैसे constructor कैसे पहचानना है हमें? A function having a function, not a constructor having. What I am calling a function having same name of class name. Function having a same name of class name is called as a constructor. और उसमें additionally ये भी बताना पड़ता है, a function does not return anything. If these two property matches, then we can say that it is a constructor. That means इसमें ये आता है कि constructor does not return anything anywhere. The first rule, a constructor is a constructor name, or instead of that constructor name, make a correction, a function name must be, और ये proper word भी है, constructor name must be similar to the name of class. Constructor name same to the similar class. और मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, a function having, what I'm saying, function having same name of class name. सेम नेम ऑफ क्लास नेम. अगर क्लास का नाम एबीसी है तो आपके फंक्शन का नाम एबीसी है, तो इन दैट केस उसे कंस्ट्रक्टर कहा जा सकता है, बट सेकंड कंडीशन मीट होने के बाद नहीं. व्हाट विल बी द सेकंड? कंस्ट्रक्टर शुड नॉट रिटर्न एनी वैल्यू. Any value. What will be the return type? Role of return type. That means that function will return something. If it is int, then that function will be return integer. If the function name is int show, that means show function will return integer value. Float show, that means show function will return float value. What do we say? Just I will clear the concept of return. How many students know about the return type? How many students know about the return type? Let me know quickly. As you know about the return type? Yes or no? Sir. Yes, sir. Ankita, what do you know about that or you don't know? I know about that. Return type is the type of data what the function returns. Okay, can you illustrate it, or can you specify some examples? For for example, int, void. These are the name of return types. Can you give a practical example of return type? See, this is the theoretical, it's okay, and the definition is also okay.
So did you know about the program? How will return the value? Shall I explain this concept? Return type. Like it, ओके, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, इसीलिए yes, मैं sir. Yes, sir. आगे चल के फिर भूल जाऊंगा मैं कि ये कंसेप्ट कौन सा है. सो इंस्टेड ऑफ दैट, जस्ट विल डू द प्रोग्राम. ओके, जस्ट आई विल क्लोज द प्रीवियस प्रोग्राम्स. Sorry. Okay, so just I will show you. We're not doing a program of constructor. Okay, we're doing a program of return type. So class, what do we say? We can say that abcd is there. I have defined the curly brace open. Just so here I will use a semicolon at the end of class, and just I will save that program. Okay. Save that program with an extension of Java. I will use double quote. Here I okay, the program will be saved in a D drive folder of Java. That I will save that program. Okay. Now my program is saved. First, just I want to declare two variables int num1 and int num2 equals to 20. Okay. And here I will use simple. So that I will define one function which returns the integer value. Okay. So here I will use int. The name of function is mul. Okay. So this one is my function name mul. I want to do the multiplication. Okay. So here I will use a curly brace open. Inside that, just I will write return and multiplied by 20. What does it mean? When we call that function, it will return the value 10 multiplied by 20. Okay, so it does not store anything. It store nahi karega, just it will return that value when we call that function. Okay, so it will write the name of program, public, write the main method, public, just I will write string of args of an array. Create the object. अभी ये ना normal function है. It's a normal. Okay, normal function. Here I will call the normal function. If it is a constructor, so what will be the name of program? Program name is ABCD. That means our function's name, function name should be ABCD. And that function does not return anything, even void. इसके पीछे void भी नहीं चाहिए. Then we can call this function is called as a constructor. Okay. ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे. डोंट वरी अबाउट दैट, बट जस्ट अभी कंसेप्ट आया है इसी वजह मैंने बोल दिया कि ये ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है एंड दिस वन इज अ नॉर्मल फंक्शन. Okay, inside that we'll create an object. So what will be the name of program? ABCD. My object name is obj is equals to new. My name of program is ABCD again. Then we'll create the object, name object, and we'll call that function object dot what will be the name of function mul. Okay, so ये store नहीं करेगा किसी तरह. That means we need to call this function inside the system.out.println if you want to. That program is absolutely right, and it does not show any output because we are not writing this object calling inside the function. So what should we do? Here instead of that, just I will write like that, system.out.println round bracket multiplication something multiplication is like that stuff. Here I will plus the plus symbol, and after that just I will call obj dot the name of function is mul. And this is an example of return type. This one is an example of return type that will return the function. Okay, here I initialize two variable num1 and num2, and the values are 10 and 20. When I perform the multiplication,
इट विल रिटर्न दैट वैल्यू इंट, और ये रिटर्न कहाँ करेगा, जहां इसने कॉल किया है, जिसने इसे कॉल किया है वहां वैल्यू डिस्प्ले कर देगा. सो व्हाट विल विद वैल्यू 10 मल्टीप्लाई बाय 20, वी गेट द आउटपुट एज 200. ओके, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिटर्न टाइप. जस्ट विल एग्जीक्यूट दैट. कैसे एग्जीक्यूट करना है, आपको डी ड्राइव पे जाना है. क्यों जाना है, बिकॉज वी स्टोर आवर प्रोग्राम इन डी ड्राइव. कहाँ जाना है, डी के अंदर, जावा के अंदर जाना है. नाउ हियर विल परफॉर्म दैट जावा C, and the name of program is abcd. abcd dot file it. Check does we have any error. Right now we don't have any error. So here I will execute it abcd. So we get the output. The multiplication is 200. ये आउटपुट को आ गया, बट प्रोग्राम एक बार चेक कर लो. हियर आई रोट रिटर्न टाइप इज इंटीजर, दैट मींस दैट वैल्यू मस्ट बी अ इंटीजर. अगर गलती से यहाँ वैल्यू इंटीजर नहीं होती है, फ्रैक्शनल वैल्यू, तो एरर आएगा बिकॉज वैल्यू इंटीजर नहीं है. सो मेक अ नोट ऑफ दैट कि वही फंक्शन नेम के पहले जो भी लिखते हो वही आउटपुट आपको आना चाहिए. इफ इट इज अ फ्रैक्शनल देन वी राइट डबल और फ्लोट. इफ इट इज अ कैरेक्टर then we also write a string as a return type. We can also write a char as a return type. We all know that the char is a data type whose size is a 2 byte. Okay, so this is an example of रिटर्न टाइप. ओके, ये आप प्रैक्टिस करना है, आगे चल के प्रोग्राम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं इंटरव्यू में. सो डू वन थिंग, ये मैंने मल्टीप्लिकेशन किया है, आप डिवीजन करो, आप सब्ट्रैक्शन करो, आप इवन ऑड का फंक्शंस लिखो, जो भी करना है इनसाइड दैट करो, एंड दैट फंक्शन विल बी, एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, यू कैन डू दैट. ओके, और आपका नॉलेज आप इंक्रीज कर सकते हो. सो मैं फर्स्ट डे से भी यही कर रहा हूँ कि अगर एक कंपनी है, that company will hire you, that company will hire you on your business logic, not your concept. Make a note of that. If you have strong business logic, for example, I want to find a even number, and if we provide a lots of option like mod operation, या मैंने जो भी बताया है, या bitwise and से आपने even number find out किया है, they will attract, और उसी से ही आपको प्लेसमेंट मिलेगा और पैकेज भी अच्छा मिलेगा. दैट मींस कंपनी पर्संस आपका बिजनेस लॉजिक ही देखते हैं, दैट मींस सिंटैक्स नहीं देखते आपका. आपके पास कितना बिजनेस लॉजिक है, अपने पास कितना माइंड है, अकॉर्डिंग टू दैट दे विल हायर यू, एंड अकॉर्डिंग टू दैट दे कैन डिसाइड योर सीटीसी, जो भी पेमेंट है आपका मंथली या ईयरली जो भी आता है. सो अकॉर्डिंग टू दैट दे डिसाइड. सो डज यू रिक्वायर दिस प्रोग्राम, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. आणि जो प्रोग्राम मी सांगतोय ना, हे कुठेतरी लिहून घेत चला, परफॉर्म करत चला. डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल इन द टीसीएस. ये टीसीएस में बहुत पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, रिटर्न टाइप लाइक दैट. आणि व्हिडिओ बघत नाही वाटतं, त्याच्यामुळं व्हिडिओ बघत चला, अदरवाइज आई विल नॉट अपलोड इट. ओके, सो रिवीजन होती है आपकी वैसे ही. सो दिस इज अबाउट व्हाट, द रिटर्न टाइप. Okay, now let's see the rules again one by one. A constructor name must be similar to the name of class. Constructor should not return any value, even void. Void is empty return type. What is void? Void is an empty return type. It means that it does not return anything. So even we cannot use before the constructor as a void. Make a note of that. And by using these two rules, you can decide whether that particular function is a normal member function or a special member function. There are two only rules are there. Okay. If we write the return type for the constructor, then that constructor will be treated as ordinary method. That constructor will be treated as ordinary method. The constructor should not be the static. Third rule. A constructor should not be a static, since constructor will be called each and every time whenever object created. And if it, why this statement is created, I already given an answer in the last previous session, I think third or fourth session. See, carefully listen, this carefully read this statement. Constructor should not be static, since the constructor will be called each and every time whenever object is created. What does it mean? What does it mean? Does anyone know? इसका मीनिंग समझ में आ रहा है? अंकिता, do you know? Shruti, what is the meaning of that third statement?
ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि कंस्ट्रक्टर शुड नॉट बी अ स्टैटिक, दैट मींस कंस्ट्रक्टर स्टैटिक नहीं होना चाहिए, बट क्यों? सिंस द कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड ईच एंड एवरी टाइम whenever object is created. What about the static statement? Does anyone know? Okay, I already told that whenever we use a static method, that means that method or that variable will be initialized during the program only one time. Make a note of that. जब भी हम static use करते हैं ना, तो one time ही वो initialize होता है. And here, whenever we create the object at that time, the constructor will be initialized. For example, I have created four objects, four times initialization will be done. Whenever I create an object 10 times, 10 time initialization will be done. And if it is a static, we all know that static will be executed once in a program. एक ही बार execute होता है static. That means it will be initialized one time only. So for that reason, this statement is बहुत important. Okay, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, क्वेश्चन ही लिखते जाओ साइड में. मैं I already told that. बिकॉज ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, और इस पे ही आपका पैकेज डिक्लेयर होता है कि कितना नॉलेज है आपके पास. इफ यू नो दैट स्टैटिक मेंबर वी कैन नॉट यूज एज अ कंस्ट्रक्टर, दैट मीन्स यू कैन सेव योर टाइम फॉर कोडिंग. तो इसलिए कंसेप्ट की बहुत वैल्यू होती है. ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द कंस्ट्रक्टर. यहाँ मैं डायग्राम क्रिएट करता हूँ. हियर आई विल क्रिएट, so for example here I will create the class name as a demo, class name as a demo. Here I will write, okay, this is an example. आपको identify करना है does it have a constructor or no, by using some rules. Okay, आपको rule भी बताना है कैसे. For example, here I will write void demo. Can I say that? Can I say that it is a constructor? Inside that I can define some statements. Can I say that? You can say that it is a statement. STMP, a statement. Can I say that this one is a constructor? Rule number one, a function having same name of class name matches, yes, and a function does not return anything, even void. Even void, that function does not return even void. Okay, if it is int, if it is a float, if it is void, then it does not return. Then we can say that this one is not constructor, this one is a normal method. Why we call normal method? Because rule 2 not satisfied. Rule 2 not satisfied. So here I will write demo, round bracket open close. Now can I say that this one is a constructor? Yes or no? Quickly unmute yourself. Again, Yes, sir. yes. Radhesham said it is a constructor. Does rule number 1 satisfied? Yes. A function having Yes, same sir. name of class name. Does the rule number 2 satisfied? A function does not return anything. उसके आगे कुछ है क्या? नहीं, nothing. That means rule 2 satisfied? Yes, it is satisfied. Rule number 3. Does that function have a static? No. That means rule number 3 is also satisfied. In that case, I can say that this one is an example of constructor. उसके अंदर क्या लिखा है? Let it be. We don't worry about that. बट ये सेटिस्फाई कर रहा है कि फंक्शन का नाम एंड क्लास का नाम, and second one that function does not return anything, and third one that function is not static. Then we can say that it is a constructor according to the three rules. ये तीन रूल पढ़े हैं, उसके हिसाब से ये कंस्ट्रक्टर होगा. What about fourth rule? Fourth rule क्या है? A constructor can be private provided an object of one class to created in the same class. What does it mean? A constructor can be a private. अभी public, private and protected, these are the access specifier. We will cover a separate session on that. But make a note of that. If it is a private, then that will be accessible only the class. That means the method. If it is a private, then that will be accessible within a class only. We cannot access inside that. Okay, this one is a fourth rule. Fourth rule. That means we cannot use in inheritance. We cannot use in a inheritance if it is a private. Fifth, constructor will be not inherited at all. This is an important rule. We already learned about the inheritance concept, and in that case, we did not perform the operation on a constructor, so we don't know about that. But the rule itself say that
in constructor. For example, I created a class and in that I define a constructor. So we cannot inherit that constructor in another class, not be inherited at all. That means ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू की, does we inherit the constructor, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरव्यू में. Then in that case we need to specify the answer, we cannot inherit the. Last one is constructor are called automatically. I will show you. Okay, don't worry about that. मैंने जो भी statement किया है ना, each and every statement I will prove you, and then we can check. Okay, the constructor are called automatically. There is no need to call the constructor if it is a default constructor. There are also another type parameterized constructor is there. So in that, this one will be called whenever we pass the parameterize. We'll discuss about that. Okay, so types of constructor based on the creating of objects in Java, we have two types of constructor. Default constructor is there, also called as a parameterless constructor, also called as a no argument constructor. Third one is a parameterized constructor. So let's create one constructor. A create करते हैं constructor. In that, just I will create one class having the name called as a tycac. Assume that your class name is there. Okay. ये जो नाम लिख रहा हूँ ना, इसके भी नेमिंग कन्वेंशंस होते हैं. दैट नेमिंग कन्वेंशन ये डिफाइन किया हंगेरियन साइंटिस्ट ने. सो जस्ट आई विल, अभी याद आया तो जस्ट विल कवर दिस पॉइंट इज हंगेरियन नोटेशंस. ओके, एचएन कहते हैं उसे, हंगेरियन नोटेशंस. यू कैन सर्च ऑन द इंटरनेट. सो इसमें बताया है कि इफ यू वांट टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, you want to declare a variable, ये naming convention होते हैं. So that will be declared by using cap letter. That means normal letter में आप variable, it is not mandatory. Make a note of that. Java follows the naming convention of Hungarian. Okay, and Hungarian says that if you want to declare a variable, if you want to declare a variable, in that case, in that case, that variable must be a capital letter. Okay, for example, here I will declare a variable int abcd. Okay, abcd is my variable name. Okay, so float I. Okay, so data type is always in small case I, like that. What we say width double, variable will be width. Assume that. So whatever it may be, if you want to declare a variable, that variable must be a capital letter. Okay. Second rule, Hungarian notation ने बताया था, मतलब ये बहुत सारे लैंग्वेजेस फॉलो करते हैं इसको. जैसे भी एक्सपीरियंस आएगा ना आपको समझ में आएगा, बिकॉज लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आर डूइंग इन द सेम नेमिंग कन्वेंशन. इससे पता चलता है कि क्लास कैसा है, लाइक दैट. ओके, सो व्हेनेवर वी डिक्लेयर अ फंक्शन दैट विल बी अ, व्हेनेवर वी डिक्लेयर अ फंक्शन, इतना इंपॉर्टेंट उतना ही बताऊंगा, बट लेटर ऑन विल डिस्कस अबाउट द इंटरफेसेस लाइक दैट. व्हेनेवर वी डिक्लेयर अ फंक्शन, in that case we will use capital case, capital case, or we can say that camel case. एक कैमल केस बोलते हैं इसको, कैम केस. तो कैमल केस मतलब क्या होता है, अप एंड डाउन्स. दैट मींस नो, कैमल केस नहीं होता है. इसमें फर्स्ट वर्ड है वो स्मॉल केस में होता है, एंड लेटर ऑन एवरीथिंग विल बी अ कैपिटल केस, कैमल केस. ओके, फॉर एग्जांपल जस्ट आई विल शो यू. माय मेथड नेम इज शो डिस्प्ले. Okay, assume that my method name is this. So according to the naming consideration, so कैसे लिखना चाहिए, show display. The first word must be in small case, and later on इसे camel case भी नहीं कहा जाएगा. Okay, so like that, assume that ये ऐसे ही लिखा जाता है, show display. If we have two words like that, we can display, we can define like that. That first word must be a small, and later on second word first letter will be a capital. If we have three words, show abcd, that this one is the, नाम मुझे याद नहीं आ रहा फंक्शन के, बट assume that this one is the name. So here I will write show a b c d. इससे पता चलता है कि this one is a function. Okay, and if you want to define a class, then the first letter must be a capital.
it's not must. We cannot say that it's must, because it's up to you if you want to follow the Hungarian rule or no. Okay, it is not mandatory. But in the most of company, Java follows the Hungarian notation. That's why जो भी इसके developers होते हैं ना वो भी follow करते हैं. If you want to define a class, then use camel case, cam case. ये rule है. For example, I want to create a class of demo, so I will write like that. इससे पता चलता है कि ये class है. For example, I want to display a box, use like that. Okay. So ये याद रखो. So ये क्यों लिखा मैंने, ये क्यों बताया आपको camel case. Okay. So just ये रिवाइज वीडियो देखना और ये लिख के लेना आप. Okay. So ये क्यों बताया मैंने आपको, because of मैंने यहाँ क्लास का नाम जो लिखा था ना ये कैपिटल में लिखा था. That's why. Instead of that, here I will write TYCSC box. First of all, we'll save the program. And inside that, just have a directory tycsc.java. Now, what should I do? Here, I will create some what I do not want to declare any variable, because just I want to create a normal program of constructor. Okay. That's why directly I can define the constructor void tycsc round bracket open close. So, does it valid? System.out. Does it valid? Does it follow the first rule? Quickly answer. Does it follow the first rule? What is the first rule? A function having the same name of Yes, class sir. name. So does it follow the first rule? Answer is yes, it follows the first rule. What about second function? Second rule. Does it return 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 type? Yes. That means ये return type return कर सकता है क्या? Yes. So can I say that it is a constructor? The answer is no. It is a normal function. No. We cannot say that, because according to the definition, constructor does not return anything. कुछ return करता है क्या? नहीं. So here I will write. Now we can say that. Can I say that now? It is a what do we say? It is a constructor. Now can I say that? Yes or no? Because rule number one, a function having same name of class name matches. Yes. A function does not return anything. Again matches. A function does not have static. Again it matches. As I am trying to use in inheritance? No. So I can say that this is a purely constructor. Which type of constructor? Default constructor. Because इसके round bracket में कुछ भी नहीं है. उसके round bracket में कुछ नहीं है. That means it is a default constructor. अगर उसके round bracket में parameter होते, for example like that int a comma int b. So this one is an example of parameterized constructor. We'll do that practical also. Right now we need to define a default constructor. And here I will write I am from default. I want to display the message. That's it. So if I want to execute, then we need to create a method. We all know that. Right? Main is that. Main is that. In that write that will create the object. See, specially constructors are designed to initialize the automatically. It is used to design automatically. Make a note of that. मैंने starting में ही statement दिया था. That means does we required to call this constructor? The answer is no. The answer is no. क्यों? क्योंकि उसे कॉल करने की जरूरत नहीं. It will automatically initialize. Just I will show you how. We know that we have created a main method, and in that we need to create an object. So here my program class name is a tycsc. Here I will create the object is equals to new tycsc and round bracket open close termination. Now if it is a normal method, then we need to call by using object. Just I will show you example. If it is a normal method, then we need to call that method by using object dot, what do we say, tycsc non bracket open close. If it is an object, sorry, if it is a normal method, but this one is a constructor, and constructor are automatically called by the system. Automatically call करता है. That means ये लिखने की जरूरत है क्या? नहीं. और लिखा तो it will generate an error.
बिकॉज डेफिनेशन के अंदर ही मेंशन किया है कि ये ऑटोमेटिकली ही कॉल हो जाएगी, दैट्स इट। जैसे भी कर्सर यहाँ आएगा डायरेक्टली सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम डिफाइंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, एसडीडीसी। whenever we create the object automatically whenever we create the object, at that time dynamic memory will be generated, and at that time same default constructor will be executed. In that default constructor I wrote just one single line that will be executed. Just I will show you. Save that program on the command prompt, e drive प्रोग्राम जावा के अंदर फोल्डर है। अभी ये पता है, आप रेगुलर करते हो तो आपको पता है कि प्रोग्राम कहाँ सेव करते हैं। it have now will execute that java c, what will be the name of program, tycsc java, compile it, check does we have any error, no, that means हमने अच्छा प्रोग्राम किया है। I will execute that java tycsc, hit back, we get the output। ये मैंने attempt की जगह क्या लिखा है, file it, I am from default constructor, मैच हो रहा है डेफिनेशन के साथ में। डेफिनेशन क्या बोला था मैंने, सी constructor is a special member method which will be called by the JVM implicitly, that means no need to call that constructor, automatically it will be called। and ये प्रूव होता है क्या नहीं, यहाँ नहीं, ये प्रूफ करके दिखाया कि नहीं पता नहीं, प्रूव करके दिखाया आपको, ऑटोमेटिकली कॉल्ड हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है कि मैंने उसे कॉल किया है, नहीं। प्रोग्राम के अंदर देखो, डज वी कॉल दैट कंस्ट्रक्टर, इसे कॉल किया है हमने ऑब्जेक्ट डॉट से, नहीं किया है। ये स्टैटिक है क्या, डायरेक्ट क्लास नेम से एग्जीक्यूट कर रहा है, नो इट इज नॉट स्टैटिक, स्टिल इट विल बी एग्जीक्यूटेड बिकॉज इट इज अ स्पेशल मेंबर। So this is an example of default constructor, this one is an example of default constructor। is it okay, did you get that concept, default constructor? We will do one more example, इसके बाद में हम और भी examples करेंगे, but अभी तक ठीक है क्या, did you get Yes, that sir. everyone? just मुझे चैट बॉक्स में यस क्लिक करके बताओ या नो क्लिक करके बताओ quickly, just I want to show, see Pratik said yes, Yes. when you join, Akash clear, quickly, अगर नहीं करते तो आगे नहीं जाऊंगा, we will close the session today itself। Shruti, Gita, Shivani, Ali, Radhesham, how many students are joined, it could be 10 or 12, Amrata, okay, 15. 15, okay, no issue, जिसको जरूरत है वो करेगा। So let's do another example, okay, यही default का ही example, but I will show you मुझे क्या करना है। So I will write my program, right? Write a Java addition using default, what do you think, is that possible, how to perform a addition, I want to write a code, I want to write a one program which will perform addition by using a default constructor। So let's do that, class add close termination, here we'll save that program name, double quote, add dot java, done। Now inside that I will declare some variable int a and int b, okay, and inside that I will create a initialize that value a is equal to 20 it is not proper practice to do the program, but ये concept समझने के लिए मैं कर रहा हूँ, especially it is used to initialize the
ऑब्जेक्ट्स, ओके, जो वन टाइम ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, वेरिएबल्स होते हैं, मान लो फंक्शन होते हैं, इसीलिए यूज किया जाता है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डॉट ब्रैकेट we will perform the addition. We will add this is the basic program. ऐसा नहीं है कि मैं int और a और b अंदर नहीं डिक्लेयर कर सकता, आई कैन एबल टू डिक्लेयर द इनसाइड द कंस्ट्रक्टर आल्सो, बट स्टिल अगर अलग अलग वे से हम प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहे हैं, सो यू विल गेट द आइडिया रिगार्डिंग व्हाट शुड आई डू। आई विल क्रिएट द मेन मेथड, आई विल मेक अ कॉपी फ्रॉम दैट, save the time, that will create the objects. ED. Does we need to call that constructor? No, automatically it will be called. So what will be the output? So we get the output as a 30. इसको कॉल करने की जरूरत है कि नहीं करने की जरूरत है? बस मेरी डेफिनेशन के अंदर ही मुझे बताया गया था कि there is no need to call. File it. See, does we have any error? कंपाइल टाइम में नहीं आया तो रन टाइम पे भी नहीं आएगा. Get the out. Addition is 30. आपके ऊपर इमेजिन है कैसे करना है. Okay. It's depend on you how will do the program. But concept याद रखना है. Rule number 1, rule number 2, rule number 3, rule number 4, 5. ये 5 रूल आपको याद रखने हैं. कौन से first, a function having same name of class name. Function does not return anything, even void. Third, it does not support the static, or we cannot use as a static. Fourth one, fourth rule will be we cannot init the property when we use the constructor. These 4 rules are important. ये क्वेश्चन पूछा जाता है इनहेरिटेंस चैप्टर में, कैन आई एबल टू इनहेरिट द कंस्ट्रक्टर. Okay, so this one is a default constructor. Now see here, I already told that one last statement is there, rule number I think 3 is there, just will check for that. Constructor should not be a static, since constructor will be called each and every time whenever object is created. जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ईच एंड एवरी टाइम. सो इसे प्रूव कैसे करेंगे? ओके, यहाँ तो स्टैटिक नहीं है. स्टैटिक रहता तो होता तो इट विल बी एग्जीक्यूटेड वंस इन अ प्रोग्राम. वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट. नाउ हियर विल क्रिएट व्हाट, विल क्रिएट वन मोर ऑब्जेक्ट. सी वी गेट हाउ मेनी आउटपुट्स. हियर विल यूज obj1. सेव दैट प्रोग्राम, कंपाइल इट. ये जो मेरा लास्ट स्टेटमेंट है ना, इसकी वजह मैं कर रहा हूं मैं. कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड ईच एंड एवरी टाइम व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. जब भी मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, डायनामिक मेमोरी मेरी एलोकेट होगी. दैट मींस दैट विल बी executed, that system defined default constructor will be executed. जो भी आपकी system defined default constructor है ना, ये execute ही होंगे. It's mandatory. Okay, so just will check. मुझे नहीं पता, I don't know about that. We'll check for that. That यहाँ एक और क्वेश्चन क्रिएट होता है, कैन आई एबल टू क्रिएट greater than one object? Answer is yes, you can create multiple objects. Okay, there is no restriction. We get the output. How many times we get the output? 2 times. What does it mean? First, whenever we create an object 1, then the first statement will be executed. Whenever we create the object 2, second statement will be created. Now I will create what? I will create 2 more objects. I will write. Also make a note of that, we cannot create objects having same name. Okay, we get the compile time error if you're trying to create the objects having same name, then we get the compile time error. Now I'm creating a 4 objects, that means this statement will be executed 4 times. Okay, let's see. Try to compile one more time and just see we get how many outputs. So can I say that whenever object is created, at that time system defined default constructor will be executed? The answer is yes. Answer is yes.
This is about what? Default constructor. जितना भी है default constructor के logics मैंने ये आपको बता दिए. So just save that program. Right. E ULT default. Okay. Also we need to save this program also. जितकी जास्त तुम्ही प्रॅक्टिस करताल ना तितकं तुमचं जावा स्ट्रॉंग होत चालेल. मैं क्लास के बारे में बोल रहा हूँ, कॉलेज के बारे में नहीं. ओके, रिगार्डिंग क्लास में जितने भी आप पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हो, तो दैट विल बी बेनिफिट, डेफिनेटली benefited for the you in the TCS, because TCS majorly focuses on the Java, majorly focuses on the Java and Python. Okay, उनके पास दो ही ऑप्शन है. The TCS exam will be conducted in Java language either or in Python language. Okay, so this is about what? Default constructor. Okay, so can I able to create, ये दूसरा concept है. Right now I will not taught you, okay, but just make a note that मैंने इसे यहाँ बनाया और फिर से ये बनाया. Two constructor having same name. Is it a valid? Is it a valid? What do you think? रूल नंबर तो सेम है, बट फंक्शन के नेम सेम चलते हैं क्या कभी? आंसर इज नो. ओके, इसमें थोड़ा सा ना डिफरेंट होना चाहिए. ये डेफिनेशन है फंक्शन ओवरलोडिंग के. डज एनीवन नो द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग? इसको याद है या किसी ने खुद से पढ़ा है फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में? Here I will write that concept is called as a function overloading. But ये गलत. Yes. Sir, function overloading is the where two function with same name but different parameters. Okay. Can I use three functions? You said that two function. Yes, sir. I will write a But definition. just the condition is they should have different parameters. Yeah, great. ये भी concept हम cover करने वाले हैं. Don't worry about that. ये function overloading का, but right now no. अभी नहीं करने वाले. A function having same name, having same name, but function. ये definition है function overloading. A function having same parameter. अभी इसे function overloading तो नहीं कहा जाता because ये constructor है, तो इसे function overloading की जगह word replace करके यहाँ आएगा constructor, constructor overloading रिप्लेस हो जाएगा. ये फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं रहेगा बिकॉज ये रूल्स अलग अलग है. सो ये क्या होगा? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. ओके, फॉरगेट अबाउट दैट, विल कवर दिस पॉइंट, डोंट वरी अबाउट दैट. सो जस्ट आई हैव अ क्यूरी, तो इसकी वजह से मैंने ये आपको दिखाया. व्हाट वी से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. नाउ वी नीड टू लर्न अबाउट अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. पैरामीटराइज के बारे में देखते हैं. पैरामीटराइज में क्या होता है? जस्ट मेक अ नोट ऑफ दैट. अभी कवर ही कर लेते हैं हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ये पैरामीटराइज के बाद में. ओके, सो यू विल गेट द ब्रीफ आइडिया रिगार्डिंग दैट. So see, I will show you the syntax of default constructor first of all. कैसे होता है? For example, I have a class ABCD. White spaces. Define the constructor. I don't want to write anything. Example of default constructor. What about parameterized constructor? Parameterized constructor that just will do that will pass the parameter.
That means inside that constructor we need to pass, okay, we need to pass the parameter. तो इसे कॉल करने के लिए क्या करना पड़ता है? जस्ट कॉलिंग मेथड, हियर आई विल राइट कॉल और एग्जीक्यूट. इसे कॉल करने के लिए क्या करना पड़ता है? वी नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. कैसे? ABCD automatically that default constructor will be called. In that case ये automatically called ही होता है, but इसे parameter pass करने पड़ते हैं. In that case we need to do like that, ABCD OBJ. सी डेटा टाइप कौन सा है? यहाँ फॉर्मल पैरामीटर कहा जाता है. इधर टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स भी होते हैं. ये फॉर्मल पैरामीटर है. ओके, व्हेन वी पास पैरामीटर, व्हेन वी पास अ वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन और कंस्ट्रक्टर, दैट विल बी ट्रीटेड एज formal parameter. Okay, so here we'll pass the data type कौन से int, then here we'll pass like that. By using this way we need to call parametric constructor. By using this way we can, ये difference मैं खुद से बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि how will call the how will define and call the parameterized constructor. Okay, let's do the practical. Here I will do what class. Name of class is something called as EY CSC1. Just save that program. Writing code. मुझे कीवर्ड चाहिए रहता है और वो कीवर्ड सेव करने के बाद नहीं कलर चेंज हो गया क्लास का, because it is a keyword. So now here I will use a semicolon and here I will use y. That just I will use a parameterized constructor. Inside that what should I do? We need to store that or directly we can perform our operation. Directly we'll write. इसका भी अभी this keyword भी आएगा, but ये कल आएगा. We'll discuss about this keyword in tomorrow. Okay, ये भी बहुत important question है. System dot out dot println. Round bracket just will perform the addition. उसमें और इसमें क्या चेंज है? डिफॉल्ट में, डिफॉल्ट के अंदर कुछ भी नहीं होता. इट इज अ पैरामीटरलेस. व्हेन वी कॉल्ड अ पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर, आई थिंक दिस वन इज दैट. सो इसके अंदर ना राउंड ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं है. और पैरामीटर इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर कुछ तो होता है. लाइक इट इज अ डेटा टाइप. इंट होता है, फ्लोट होता है, डबल होता है, स्ट्रिंग होता है, व्हाटएवर इट मे बी. ओके, जस्ट विल कॉल दैट मेथड. We define the parameterized constructor, it is a mandatory to pass the value. Make a note of that. लिखने से नहीं चलता है. We need to pass the values. Okay. Here we'll pass the values. What will be the name of class? TYCSC1. Okay. Then we create the object which is new TYCSC1. And round packet here we need to pass 20, 20. Or whatever it may be. Just here create a local variable int c is equals to something and d is equals to something and pass c and d. Okay, ऐसा भी चलेगा. और directly we can pass the value also. Okay, but value कभी भी हम directly deal नहीं करते. Make a note of that. While creating the project we need to pass in variables. Okay, but ये temporary purpose के लिए मैं दिखा रहा हूँ. Just I will show you how will execute that program. Later on we'll pass that by using a local variable. This is about parameterized constructor. See, here we'll do Java C. By CS Java, get the output addition 40. सही एग्जीक्यूट हुआ है बट उसमें स्पेस नहीं है, इसकी वजह से अलग दिख रहा है. सी एडिशन 40. सो ये मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्ट है. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्ट. So I will save that program also. And I will suggest one thing. ये जो मैंने वीडियो अभी अपलोड करूंगा आफ्टर हाफ एन आवर,
वॉच दिस वीडियो 1 और 2 टाइम, इससे पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये प्रोग्राम देने के बाद में आप प्रोग्राम देख के वही प्रोग्राम करोगे ना, तो मैंने जो बोला है ना वो याद नहीं रहेगा। बता सकता हूँ ओनली। सी हाउ विल कॉल बाय यूजिंग अ लोकल वेरिएबल like that x comma y, x is equals to 30, here instead of that 20 and 20 here pass x, ऐसा भी चलता है। Are the local variables, इसका स्कोप कहाँ तक है, ये कर्ली ब्रेस ओपन, ये कर्ली ब्रेस क्लोज, यहाँ तक ये scope। जैसे भी इसका वैल्यू पास हो जाएगा, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, तो यहाँ एक्स एंड वाई की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, यहाँ वर्ड आएगा सी, यहाँ नहीं, यहाँ a is equals to x, a is equals to x, comma, यहाँ आएगा b is equals to y, that means x और y की वैल्यूज यहाँ a एंड b को रिप्लेस हो जाएगी। One more time and see addition is a 60. Does it work? Yes. So ये ऐसे वर्क होता है। So this is about what? Parameterized constructor. Okay. So याद रखना है, कंस्ट्रक्टर नाम याद रखना है कि कंस्ट्रक्टर अगर आया तो उसे कॉल करने की जरूरत नहीं है। No need to call the constructor. Okay. So this is a simple example of default constructor and parameterized constructor. So आज के लिए इतना ही करते हैं because also constructor overloading is there. So tomorrow we'll discuss about the this keyword and constructor overloading and based on the next concept. Okay. So till now, does anyone have query regarding that? Because I think 1 hour is also completed. Recording is there. So 57 minutes. Okay. Does anyone have query? Say no. See, No, I sir. will give you definitely जितना भी आपको प्लेस करने के लिए लगेगा, so I will definitely give you. बट आपको एक याद रखना है कि जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, so that will be benefited for you. So अगर आप इसे 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करते हैं, डोंट वरी अबाउट, थोड़ा सा लाइट से चेंजेस करो। फॉर एग्जांपल जैसे आई वांट टू शेयर, ये मैंने प्रोग्राम किया है ना, इंस्टेड ऑफ दैट जस्ट इंट की जगह फ्लोट लेके देखो, फ्लोट की जगह डिफरेंट डेटा टाइप डबल लेके देखो, ये लोकल की जगह दूसरे वे से देखो। सो लाइक दैट, यहाँ मैंने टी वाई सी ए सी इंट इट लिखा है, सो यहाँ मैंने सी डायरेक्टली एडिशन परफॉर्म किए। तो आप क्या करो, इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ और एक वेरिएबल क्रिएट करो, लाइक ऐसे इंट सी कोमा टी, सी इज इक्वल्स टू ए, ये थोड़े से चेंजेस करके दो, इससे आपका माइंड शार्प होगा और आपका बिजनेस लॉजिक बढ़ेगा। सो कुछ भी चेंजेस करते रहो और ऐसे चेंजेस ग्रुप पे डालते रहो, बाकी के यूजर्स बाकी के स्टूडेंट जो भी है वो देखेंगे। एंड आई विल सजेस्ट वन मोर टाइम कि मैं जितने भी वीडियो बना रहा हूँ, डोंट अवॉइड दैट वीडियो। ठीक है, कभी बोर होता है आवाज सुन के तो ऐसा लगा तो छोड़ दो, बट आई विल रिवाइज इंटरव्यू की जितने भी क्वेश्चन है ये साइड में लिख के ले लो और ये वीडियो रिपीट देखो। ओके, सो दैट विल बी बेनिफिटेड फॉर यू, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिटेड रहेगा।